Hi everyone, Rana sir is here. Welcome to our Rana sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is physics. In this physics, I will explain about the mirror, reflection of ray from the con- convex mirror. So you concentrate on this video from starting to end to develop your knowledge on this point. Here I will also explain its theory and then the application of convex mirror. I will use its concept in numerical. So you concentrate here, and if you are understanding this solution, so you like this video. If you are understanding the solution of this question, so you like this video, and also you share this video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic in this educational channel more and more. Okay student, now I am going to start this video, so you concentrate here. Okay, positively I am going to start it. So first of all, I will write solution and then I will read the question. Student, first of all I will explain all this information into English, so students who are reading in CBSE board, first of all I will explain all this information into English, so students who are reading in English medium, that is in CBSE board, those students can understand its concept in detail, and then I will translate all those informations into Hindi, so students who are reading in UP board, that is in Hindi medium, those students can also understand its concept in detail. So you concentrate here. I am going to start it. Question number 1. A convex mirror. This is a convex mirror with radius of curvature is 5 meter. Radius of curvature is given here 5 meter. Is attached with a motorcycle to see the objects behind the motorcycle. Full stop. Describe the position, nature and size of image formed by this mirror of another motorcycle coming from behind at a distance of 5 meter. So this is the concept of convex mirror. In this case I will put object from the mirror 5 5 meter behind the mirror, and then in this case curvature that is given here 5 meter. So I will use the relationship between focal length and radius of curvature. With the help of this formula I will get the value of f, and then I will use the mirror formula for calculating the size of the image. And after calculating the size of image I will also determine what will be its nature of the image. We will explain all these informations in detail, so you concentrate here. First of all I am going to make one convex mirror, a mirror which is painted with a red oxide lead. So here one axis I will draw. That axis I will say this is the principal axis. This is the principal, principal, principal axis.
This is the principal axis I have drawn there. Now this is the optical center of the convex mirror, and this here I will also say this is the convex mirror. So its name I am going to write here, convex mirror, mirror, convex mirror. Now the object is already kept behind the this mirror. So here I am keeping one object, and from optical center of this mirror I will say its length is given 5 meter. Its length is given 5 meter. Okay, sign convention I will also define here, because without sign convention we are not unable to evaluate the the size of the image. So sign convention I will explain here in detail. That is very important. So from center of the mirror I will draw a line which is perpendicular to this line. I will say this is the y axis. This is important, each and every student has to know it. And principal axis is also called a x axis. Here I will say x axis. From I will say this is the origin, the intersection of mirror and the principal axis. I will say that is the origin. Now from the length, from the center of the mirror to the object, that distance is given here 5 meter. That is given here 5 meters. So I have taken here. But from origin to right side of the axis, principal axis, I will take here positive sign, and from the center of the mirror to upward direction to the positive y direction I will take positive sign, and from the center of the mirror to the left hand side I will consider minus sign. So here will be minus sign. So this is the distance of this object. Here I will say this is the object, object. This is the object. Now from the object I will draw two lines such that one line is moving to the convex mirror parallel to the principal axis. I will say like this. Now on the mirror, on the inside of the mirror, there is a paint. I have also painted with red oxide. Now due to paint it will reflect this direction. So I will say, I will imagine here, if there is a focus, if I will mark dotted line, so it will pass through focus of the convex mirror. Now other line I will also, other ray will also pass through the center of the curvature. So I will say this is the C, and it is passing through, it is going from object to center of the curvature. It will meet between optical center of the mirror and focus. So I will say this is the image, and this image is erect. This image is erect. Now this is the object. It has head upward, and this image has also
head upwards. So I will say object is also erect and image is also erect, but it is diminished with respect to objects. So I will calculate what is the actual size of the image with respect to object, and I will also say it is the virtual in nature. According to the figure, I am saying virtual in nature because we have to describe the position of the nature. So nature will be virtual because it is formed behind the mirror, so it is virtual. Now its size is small with respect to object, so I will say that is the diminished in size, but I will say it is erect because both object is also has head upward and image is also have head upward, so I will say image is erect. Now I am going to solve, and after solving we will get the position of the image from the center of the mirror. Mirror is convex mirror. From the center of the convex mirror, and I will also write what is the I will also calculate what is the size of the image. All these two informations I will calculate mathematically, and then finally I will explain it in detail. Okay, now first of all here I will write given that, given, given that. So all informations which are given in the question I will note down here. After writing then requirement of the question, I will use the appropriate formula to evaluate the value of image distance from the center of the convex mirror, and also I will get the height of the image. Okay, so one information is given, that is radius of curvature that is written with r, that is 5 meter, and also describe the position nature and size of the image formed by this mirror of another motorcycle coming from behind at a distance of 5 meter. It means that u is given here. I will put u is minus because behind the mirror I have to put here, because in the this is the left hand side of the origin, so it will be minus 5 meter. So here I will put minus 5 meter. Now we have to calculate position, we have to calculate size of image. Size of image is v, we have to calculate it, and also we have to calculate the length of image, that is height of image, we have to calculate. Okay, so all these informations I will calculate with the help of a formula, and then I will explain with the diagram what is the value of, yeah, what is the distance of image from the center of the convex mirror, and what is the size of the image. So all these informations I will calculate, and after calculating I will give the information of position, nature, and its size I will describe. Okay, so after writing it we have to use from the mirror formula. From the mirror formula we have to also write one statement, and after writing that statement, and then I will write formula. We know that we know that from mirror formula, 1 by f which is equal to 1 by v
plus 1 by u. This is the mirror formula. So radius of curvature I know. Here I will also use another formula, that is the relationship between radius of curvature and also focal length. Means focal length is equal to, I can also write here focal length f is equal to r divided by 2. This is the relationship between radius of curvature and focal length. So I have two formula. All these two I will use in this question. I will use in this question two formula. One is the one mirror formula, that is 1 divided by f, which is equal to 1 by v plus 1 by u. This is the one formula. And relationship between radius of curvature and focal length, that is f is equal to r divided by 2. Focal length, that is radius of curvature, is given in this question, so we will get the value of f, and the value of u is given. So I will put these two information in formula number 1, so we will get its value, and after getting its value I will give its geometrical meaning from the diagram. Okay students, so all these informations I will translate into Hindi, so students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can understand its concept in detail. Okay student, so you concentrate here, I am going to explain it. Okay यह क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है. ओके तो यह बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न, यह जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर है. इसका मीनिंग ये होता है, एनसीईआरटी जो होता है वो इंटीग्रिटी, क्वेश्चन का कंसेप्ट का इंटीग्रिटी रखता है, इसलिए इस क्वेश्चन में एक कहा गया है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद से इसके सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट इजीली समझ सकते हैं इसके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को और इसके कंसेप्ट को भी. इसमें कहा गया एक कन्वेक्स मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर is attached with a motorcycle to see the object behind the motorcycle. इसमें कहा गया है कि एक कन्वेक्स मिरर है. कन्वेक्स मिरर का हिंदी होता है उत्तल दर्पण. इसको हिंदी में लिखते हैं उत्तल दर्पण. इसको हिंदी में हम उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर को हम उत्तल दर्पण के नाम से जानेंगे. इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे. उत्तल दर्पण के बिहाइंड, पीछे जो होता है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु. ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु. इस वस्तु को 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है. अब इसका साइन कन्वेंशन को भी हम समझेंगे, क्योंकि जहां पर मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं. ये मुख्य अक्ष और मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पर ओरिजिन ओ लिखे हैं, उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट किए हैं. इस पर जो होता है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, उसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस के नाम से जानेंगे. वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है, कोण जो होता है 90 डिग्री है. तो अब इस ओरिजिन से जो होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव साइन लेंगे, और ओरिजिन से जो होता है अपवर्ड जाएंगे, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और उसके नीचे जाएंगे तो निगेटिव साइन लेंगे. तो हम ऑब्जेक्ट के जो होता है इस ओरिजिन के लेफ्ट में रखे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन होगा. इसलिए जहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें यू का मान हमको माइनस लेना है, इसलिए -5 मीटर होगा. ओके अब देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं.
रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं। इस वक्रता केंद्र यह जो एक सर्किल, इसको डॉटेड लाइन से हम इसको मिलाएंगे तो यह एक सर्किल का रेडियस होगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो होता है, हाँ, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है एक इस सर्किल को, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल का रेडियस होगा। इसलिए रेडियस को उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो होता है, हम जानते हैं कि फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, वह दूरी और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, मिरर का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसके बीच की दूरी, वो दोनों सेम होता है। तो अगर यह दूरी एफ मानेंगे, यह भी एफ होगा, तो 2f इज इक्वल टू आर होता है, इसलिए f इज इक्वल टू r/2 होगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू r/2 होता है। ओके, हमारे पास ये दो फार्मूला हो गए। दो फार्मूलों का यूज करके इस मिरर का, इस इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब का दूरी जो अवतल दर्पण के केंद्र से, अवतल दर्पण और मुख्य अक्ष का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वहां से और इमेज के बीच के जो दूरी होता है उसको हम क्या कहेंगे, भी कहेंगे। उसको हमको कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट दैट वन। उसको हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर देखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ए से बी के बीच की दूरी को ए से बी के बीच की दूरी को HO से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ए डैश कहेंगे और यहाँ पर बी डैश कहेंगे। तो ए डैश और बी डैश के बीच की दूरी को जो होता है हम HI से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ जो होता है स्टैंड, ओ का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट और एच का मीनिंग होता है हाइट। ये ऑब्जेक्ट हाइट होता है और यहाँ पर आई का मीनिंग होता है इमेज और एच का मीनिंग होता है हाइट। इमेज का हाइट होता है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब की हाइट होता है और ये जो होता है वस्तु की हाइट होता है। तो वो इमेज की हाइट को भी हमें कैलकुलेट करना। ओके स्टूडेंट, तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए गए हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया है। लिखने के बाद से इसमें जो होता है, जो रिक्वायरमेंट भी है और ये HI है, इमेज की हाइट है। इमेज की हाइट मतलब प्रतिबिंब की हाइट है और प्रतिबिंब का दर्पण और मुख्य अक्ष के का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से और उस इमेज के बीच की दूरी है, उसको हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज करके हम भी और HI भी कैलकुलेट करेंगे। HI का भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम भी यूज करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि HI डिवाइडेड बाई HO, ये इज इक्वल टू होता है -V डिवाइडेड बाई U। इस फार्मूले को यूज करके हम HI के वैल्यू को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, इसको कहेंगे फार्मूला नंबर 3। तो ये 3 फार्मूला जो होता है इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, हम जानते हैं ये सभी इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लेन किए हैं आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर ये सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली समझ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट है उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिखें और लिखने के बाद से पॉजिटिवली सेंड करें। हम पॉजिटिवली आपके क्वेरी को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो होता है पॉजिटिवली हम प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्दर आई एम गोइंग टू use these 3 formula to evaluate the value of V and also to evaluate the value of HI, that is image height. Okay student, now further here there is no extra space, therefore I will erase all these information, and after erasing this information then we will get
the value of V, and also we will get the value of HI. Okay student, so one by one I am going to evaluate. So here the value of R is given, that is 5 meter. So I know F is equal to R divided by 2. It means that here the value of R is 5 divided by 2. It means that this is the focal length that is given in meter. Now I have to use formula of from mirror formula. So here I will write 1 by F, which is equal to 1 divided by V plus 1 divided by U. So I will substitute the value of F and also value of U in equation number 1, that is in formula number 1, to evaluate the value of V. So here I will put the value of F, that is given here 5 divided by 2. So here I will write 5 divided by 2, which is equal to 1 divided by V. Here I will put 1 divided by U. The value of U is already available in the diagram, that is minus 5 meter. So in the bracket I will put here minus 5 meter. Now further I will simplify. After simplifying, I will get the value of V, that is the image size from the optical center of the mirror to the image. So we will evaluate the value of V. Okay student, now further I am going to erase the data which is not necessary now, and then I will evaluate the value of V. So value of V I can write here 1 by V, which is equal to, here I will put, so this plus and minus, plus and minus, that will be minus. I can write one step more, so each and every student can understand easily. So 1 divided by 5 by 2, so it will be 2 by 5. So here I will write 2 divided by 5, which is equal to 1 by V, and here I will write plus minus, multiplication of plus into minus, that will be minus. So here I will put here 1 divided by 5. Now further I can write here 1 by V, which is equal to 2 by 5, and then here this is minus, it will come in left hand side, it will be plus 1 by 5. So I will take LCM of 5 and 5. It means that here one information I am going to say, this is the like fraction, this is the like fraction, because numerator different, numerators are different but denominators are same. So I will say this is the like fraction. So I can simplify as I will simplify, this is like fraction, so I will simplify numerator, I will add 2 plus 1 divided by 5. Further I can write 3 divided by 5. So 3 divided by 5, it means that 1 by V, which is equal to 3 divided by 5. So in other words, we can say that 5 is equal to, V is equal to 1 by 5, we can write there. So V is equal to, here I can write V is equal to 5 divided by 3, 5 divided by 3. So here I can write properly 5 divided by 3. This is 5 divided by 3 meter. So I can write here. So this is the length of image from the optical center of the mirror. So I will say image is formed at 5 by 3 meter behind the mirror. So I can write like this. Okay, now all these informations I will also explain into Hindi, so students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can understand this concept in detail. यहाँ पर हमने मिरर का फार्मूला लिखा था, और
और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो फार्मूला एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, वो भी फार्मूला लिखा था। और ये भी हमने फार्मूला लिखा था, जो इमेज का हाइट है, प्रतिबिंब का जो हाइट है डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, वस्तु का हाइट, वो इज इक्वल टू होता है माइनस भी बटे यू। यू भी जो होता है इमेज का साइज होता है, और यू जो होता है ऑब्जेक्ट का साइज होता है, फ्रॉम द दैट इज हाइट, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु का दूरी होता है, और मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज प्रतिबिंब का दूरी होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिखे हैं। ओके, तो मिरर के फार्मूला में हम जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो हमको 5/2 मिला। ओके, अब मिरर के फार्मूला से हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब एफ का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किए, यू का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किए, इसको सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने भी का वैल्यू जो था 5/3 मीटर आएगा। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 5/3 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ओके, so one requirement of this question I have got here। इस क्वेश्चन का जो एक रिक्वायरमेंट है जिसको हमने पाया है, वह है v इज इक्वल टू 5/3 मीटर। ओके, सेकेंड इंफॉर्मेशन को हम इवेल्युएट करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हाइट है और इमेज हाइट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद से इस डायग्राम का यह जो डायग्राम है, इस डायग्राम का हमको नेचर बताना। नेचर मतलब प्रकृति बनाना, एक कैसा इमेज कैसा बना है। तो इमेज जो होता है सीधा बना है और आभासी बना है। इसको इंग्लिश में इरेक्ट और वर्चुअल कहेंगे एंड बिहाइंड द मिरर के पीछे बना। ओके स्टूडेंट, सो now further I'm going to erase all these informations, and then I will evaluate the value of image height. So value of v I have to save here because this is important. So this length is 5/3 meter. So that image is 5/3 meter. So here I can write 5 divided by 3 meter. So this is important. This is the image distance. Now further I am going to erase it, and after erasing I will evaluate the value of image height. Okay, from the magnification by mirror formula. From the magnification by MIRROR mirror formula I can write here M is equal to HI divided by HO. HI divided by HO is equal to minus V divided by U. So I will use this formula to evaluate the value of HI, that is the height of the image. So these informations I will also erase. Now here I am going to substitute the value of HI. Now value of HI I have to calculate, but value of HO the value of HO I have to use. The value of HO I have to use, that is HO, which is equal to, here I will put minus the that is available in the question, the value of V. The value of V is 5/3 meters. So here I will write 5/3 and divided by value of U I have to put here minus 5. Okay, further I will simplify. So here after
simplify, I have to put here the minus multiplication of minus into minus, that will be plus. So here I will write 5 divided by 3, and this 5 will be with 3. So here I will write 5. So further I will simplify this 5, and this 5 will cancel out. Both will cancel out. So here I will put 1 by 3 HI divided by HO. So this information I have to put there. In other words, we can write HI, which is equal to 1 by 3 HO, 1 by 3 HO. This formula I will erase from here. So here I will say, so HI, which is equal to 1 by 3 HO. So HI is the height of the image and HO is the height of the object. So in other words, we can say that mirror image is 1/3 of object height, 1/3 of object height, and it is also erect and it is virtual in nature. Okay, so all these informations I will explain in detail. Now I am going to translate all these informations into Hindi, so student who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those student can understand its concept in detail. Okay, इसमें मैग्निफिकेशन का हिंदी होता है आवर्धन क्षमता। अब जो मिरर का, जो दर्पण का आवर्धन है, उस आवर्धन का फार्मूला हम एम से लिखते हैं मैग्निफिकेशन। यहाँ पे एम होता है, एम से मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए एम लिखे। एम जो होता है एच आई बटे एच ओ होता है। एच आई का हिंदी होता है इमेज का हाइट, बट वो का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु का हाइट। इमेज का हाइट मतलब वस्तु का हाइट बराबर होता है, यहाँ पर मिरर के केस में जो होता है ये माइनस यूज करते हैं, लेकिन लेंस के केस में प्लस यूज करना होगा। तो यहाँ पर भी जो होता है इमेज का दूरी होता है दर्पण से, और यहाँ पर वस्तु का दूरी होता है दर्पण से। तो इसमें जो होता है एच आई का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है एच ओ के फॉर्म में। तो भी और यू का मान ऑलरेडी जो होता है क्वेश्चन में दिया गया, भी का मान जो होता है फार्मूला से हमको इवेल्युएट करना था, इसलिए यहाँ पर इवेल्युएट किए हैं। इसका वैल्यू आया 5/3 मीटर। ओके, तो इस फार्मूले में जो होता है इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले से माइनस है, अब बाद में यू का भी मान माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस। अब जो होता है ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर ये अंश है, ये हर है, तो हर में गुणा हो जाएगा। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एच आई बटे एच ओ इज इक्वल टू 1/3, इस यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग होता है तिर्यक गुणा। तो एच आई बराबर हम लिख सकते हैं 1/3 एच ओ। इसको हम पढ़ सकते हैं इस तरीके से कि इमेज का जो हाइट है, जो प्रतिबिंब का हाइट है, वह 1/3 है वस्तु के हाइट से, वस्तु के हाइट से 1/3 गुना है। ओके, तो इस तरीके से हम कहेंगे, और इसको कहेंगे ये जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब सीधा बना है। जो वस्तु का भी जो शीर्ष है उसी के डायरेक्शन में इमेज का भी शीर्ष है। लेकिन हम देख रहे हैं वस्तु इतना बड़ा है लेकिन इमेज छोटा है, इसलिए ये डिमिनिश्ड को इंग्लिश में, हिंदी में बस छोटे को इंग्लिश में हम डिमिनिश्ड कहते हैं। लेकिन ये मिरर के पीछे बना है, दूसरी साइड में बना है, इसलिए हम कहेंगे ये वर्चुअल है। ओके, सो वन इंफॉर्मेशन आई विल राइट हियर प्रॉपरली, सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट इजीली। सो आई विल से image is formed, this is important information, that is calculation of this solution. Image is formed at 5/3 meter, 5/3 meter behind the mirror,
BEHIEND, behind the mirror. MIRROR, जो इमेज बना है मिरर के पीछे बना है, लेकिन कितने दूरी पे बना है, 5/3 मीटर की दूरी पे बना है. ओके, वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फिगर. एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन आई विल से, image is formed 1/3 height of object and it is erect, और यह जो होता है सीधा है, and it is virtual in nature. That information, yeah, those information I will also write here. Image is formed at at 1/3. Here I will write 1/3, THIRD, 1/3 of object. 1/3 of object. It is erect and virtual in nature. Next information I will also write here. It is erect and virtual in nature. Here I will write, it is erect. It is erect and virtual in nature. VIR, virtual in nature. It is erect and virtual in nature. So these are the final answer of my question. One answer is this one, and other is V is equal to 5/3 meter. One is this one. So one will answer this one and other answer is this one. Okay. So according to this way, solution of this question I have done clearly. If you have any doubt, yeah, any query, so you write your query, yeah, any doubt point in the comment section positively, and then you send. After sending, I will analyze your query and then positively I will give. So you like this video and also you share this video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve, that is update and develop their knowledge on this topic. Okay, now further I will meet with you in the next question and its solution and also topic, and further you study it, and after studying, if you have any doubts, so you write. If you are understanding this question, so you like this video and also you share this video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic, and simultaneously you also subscribe this educational channel more and more. Okay, so I will meet you in next video. Thank you for watching. Jai Hind, Rana sir.